Vipul? Okay. So we were talking about product. Now product का एक लाइफ साइकिल होता है कि सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, फिर वो मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ. सो इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. So if I plot it, x-axis, y-axis, origin. On x-axis, I have time. मैम रफ डायग्राम चलेगा ना? स्केल से बना है. And y-axis, I have sales volume. So सबसे पहले आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो फर्स्ट फेज इज डेवलपमेंट. ओके, देन डेवलपमेंट करके इफ यू फील दैट हाँ फीजिबल है ये प्रोडक्ट मार्केट में, वी कैन टेक इट टू द मार्केट. सो देन इट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. आफ्टर इंट्रोडक्शन, सो यदि मैं इसको बनाऊं तो फर्स्ट फेज जो हुआ हमारा, दैट इज डेवलपमेंट. Second phase, introduction of the product in the market. Then I will talk about growth. So during introduction phase, I am not thinking of making profits. I'm just thinking कि मैं मेरे competitors के सामने कैसे टिक जाऊं. So it is also a question in case studies that you are a newly established business and your aim is to earn high profits. That is not correct. If you are a newly established business, your first aim will be survival. That is how you stay there in front of your competitors. It will not be profit. And this is an important question. Then growth के बाद maturity. Then saturation. And last में decline. Last में decline. So if I try to plot it, research and development phase में या डेवलपमेंट में फेज में प्रोडक्ट इज स्टिल नॉट देयर इन द मार्केट, तो यहाँ कोई लाइन होगी ही नहीं. इंट्रोडक्शन में नाउ योर प्रोडक्ट इज जस्ट कमिंग इन द मार्केट. सो इंट्रोडक्शन फेज में जितना ऊपर चला जाए उतना बोनस. सो इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ. ओके, देन मेच्योरिटी, और ऊपर जाके ये रुका है एक जगह. सैचुरेशन, अब it is not growth, it is staying where it is. Saturation. And then in decline, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा. So this is your business cycle, product life cycle. This is your product life cycle. And first stage, development of the product. This is your first stage, development of the product. So यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे keywords क्या है? Prototype, that is just इमेज की ऐसा या क्लोन की ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा. सो प्रोटोटाइप विल बी टेस्टेड, मार्केट रिसर्च होगा, एंड देयर इज नो सेल्स इन दिस टाइम. तो डेवलपमेंट का कीवर्ड्स क्या है? प्रोटोटाइप. दैट इज, दिस इज हाउ योर फाइनल प्रोडक्ट विल लुक. प्रोटोटाइप, देन प्रोडक्ट विल बी टेस्टेड, देन नेक्स्ट कीवर्ड इज टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट.
टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोटोटाइप है, टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट है. क्या सेल्स होती है इस टाइम में? नो सेल्स. इंट्रोडक्शन में, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट. During introduction, product is launched in the market. It will grow but very slowly. So हम advertisement कैसी करते हैं introduction में? It is informative advertising that some product is there in the market. So keyword is informative advertising. It is informative advertising. Are profits made? Is aim profit? No, profit is not the aim. लिखो उधर, profit is not the aim. क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पूरी कवर हो जाती है इंट्रोडक्शन फेज में? द आंसर इज नो. सो इंट्रोडक्शन में आपका एम क्या है? एम सर्वाइवल इन फ्रंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. इंपॉर्टेंट है ये. सर्वाइवल, कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, उनके अगेंस्ट सर्वाइव करना है. सर्वाइवल अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. सर्वाइवल अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स इंट्रोडक्शन में है. देन लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ टाइम. सो व्हेन योर ब्रांड इज, अभी हम लोग देख रहे हैं ब्रांड लॉयल्टी की तरफ. अभी यू आर परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट. सो कीवर्ड्स यहाँ कहाँ क्या हो गए? सबसे पहले यू आर लुकिंग फॉर ब्रांड लॉयल्टी. सी इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड हर स्टेज के अपने कीवर्ड्स है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, और वो वर्ड्स यूज करके आंसर लिखना है. सो ग्रोथ टाइम में इट इज ब्रांड लॉयल्टी. Persuasive advertising, that is you are trying to convince the consumers to buy your product. So advertising कैसी होगी यहाँ पर? लिखो. Persuasive advertising. And in growth time, profits start to be made. Profit starts. And in growth phase, development costs are covered. Development costs covered. Now maturity. Even growth phase में sales is increasing. One more keyword, sales increasing. देख रहे हो ना, सेल्स ऊपर चढ़ रही है. सेल्स इंक्रीजिंग. नाउ इट इज मेच्योरिटी.
Let's talk about maturity stage. Sales अभी भी increase हो रही है, but not at a fast pace, slowly. तो आप लिखेंगे sales now increase but at a slow pace. So sales increase but at a slow pace. Now at maturity stage, you do lot of advertising so that you are still there in the competition. So lot of advertising is done to maintain the sales growth. Lot of advertising is done to maintain sales growth. Mature एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रॉफिट्स हाईएस्ट कब होते हैं? At maturity stage, profits are highest. Profits are highest. Which they use competitive pricing or promotional pricing in this stage? Okay. So in maturity stage, pricing strategies can be both competitive or promotional pricing. Exactly, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से you will decide that मैं price when we अभी हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, जब प्राइस पढ़ेंगे तो I will cover. But maturity में pricing can be competitive or promotional. Competitive or promotional. Okay. So maturity stage में what are the producers trying to do? Stabilize at its highest point. Stabilize करना चाह रहे हैं कि अब ऑलरेडी मेच्योरिटी है, जहां तक हो सके हम यही रहे, ग्रोथ कर रहे हैं बट एट अ वेरी स्लो पेस. देन saturation. Are you able to grow over this point? अब तो बस मैं I am just trying that I remain here and do not decline. Decline is now sales are falling. Decline में आप खुद ही देखो ना. Yeah, so decline में sales are falling. Okay, so जितने लोग मुझे पहले चाहिए थे अब नहीं चाहिए, because मैं इतना प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वो बिक नहीं रहा है. Now one question which is important, do every product sees the same life cycle, that is development, introduction, growth, maturity, saturation and decline? So the answer is no. There are some companies in the world, very few of course, that do not see the declining phase. नीचे नहीं गिरी, वो जहां है वहां है, trying to maintain their highest sales. हाँ, so अभी हम next वही बात करेंगे, extension strategies, या what are the strategies that you will use so that your firm or your company does not face that declining phase. So how will you extend your product life cycle is the next question. कि मैं maturity तक रुक जाऊं, saturation चलो decline तो ना देखूं. Okay, so how will you extend your product life cycle is the next question. Can I answer? Yes, please. We can enter new markets, make changes in our product or make our product
varieties. We can also sell it to new retailers or new people. Like, we can change our promotional strategies and advertise. Yes, please. Ma'am, we can create new users, ma'am. We can introduce like new features and then we can like seek for new target markets. Next Okay. one. So सबसे पहले तो you find first point which I liked is you will try to sell your product in new markets. So first point लिखो new markets. Search for new markets. Why do you think many people globally come and try to sell their products in India? India is such a huge market. So many consumers. So new markets देखो. That is you export to some other country. तो इसको आगे explain करो. लिखो. Knowledge का point लिखा आगे explain कौन करेगा? So new markets trying to export in other country. Export in another country. So you're trying to export in another country, then make small changes in your product design, color, packaging, making it more attractive. So क्या change कर सकते हैं? In product design, what changes you can do? In product design क्या क्या हम change कर सकते हैं वो हम बात So product design that you are making small changes in color and packaging. Changes in color, packaging. So for extending your product life cycle, try to find new markets, export in another country, then product design, change in color, packaging, etc. Introduce a improved version of your product. So third point हम क्या बोल सकते हैं? इसी का third point, नया version, improved version of your product. Keyword improved version of your product. Yeah, new variations in original product. So these are all words you can use. New variations. New variations in product. So extend your product life cycle. New markets, export in another country. Product design, changing in color, packaging. Improved version of your product. New variations in the existing product. Selling in new markets, that is exporting. Make small changes in product design,
color, packaging, making it more attractive, making the product more attractive is again a keyword. So this is how, and this is important question, this is how you can extend the product life cycle. कौन से स्टेज पे हम एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं? मैच्योरिटी से यूज करना स्टार्ट करो हेवी एडवर्टाइजिंग, सो दैट सैचुरेशन देखा तो भी डिक्लाइन ना दिखे हमको. So you can change the packaging, you can enter new market, introduce new products. Ma'am, I had a question, ma'am. Yes. मैम इज इट मैम लाइक इज इट एवर पॉसिबल कि मैम अगर डिक्लाइन स्टेज में अगर चले गए तो फिर मैम वापस हम लोग सैचुरेशन पे आ सकते हैं? रिवर्स जाना, डिक्लाइन को रोकना बहुत बहुत मुश्किल है until and unless you come up with such an innovative idea. You are already in the declining phase. Until and unless, देखो अभी है ना कोई कंपनी एक्सपीरियंस तो था उसके पास, तब इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी तक वो आए. मे बी यहाँ पर लोग पीपल ट्राई, डिक्लाइन तो हो ही रहे. आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. सी थिंक अबाउट, मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर्स आए, योर कंपनी इज नॉट विथस्टैंडिंग दैट कॉम्पिटिशन, डिक्लाइन होना स्टार्ट किया है, किसी के साथ मर्ज कर लिया, मर्जर हो गया, some merger takes place. Think about some real examples like this is very popular कि जियो आया था तो कौन से दो कंपनीज मर्ज हुए थे? So Idea or something, I don't remember. if it is Vodafone Idea, we are just taking an example. So वो decline होके खत्म ना हो उसके लिए they came together. आज फिर से है ना मार्केट में. So it is rare, but it is there. Now, very important question. What is the role of packaging? They ask role of packaging. क्या आपने कभी सुना है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग? Yes, ma'am. Why do you pack the product? ऐसे ही दे दो ना, उसको बोलो घर से थैली लेके आ, उसमें डाल के देते हैं तुमको. ऐसा नहीं होता. Ma'am, for protection of the project, sorry, ma'am, for the protection of the product, and then like to display information, and then etc. Role of packaging, yes. So basically promotion and protection, right? So it is, yes, protection of the product. When you send the notes, ma'am, that time also you pack the product, like the notes to save it, like protect. So you will not just write about protection, उसको आगे explain करोगे. Protection of the product. Now you will read the case study and you will understand कौन सा product है ये. So if it is eatable, it should not be spoiled, it should remain fresh. वो words use करोगे. So protection of the product, not allow it to spoil. या keep fresh. यदि eatable है तो keep fresh. Keep fresh हर एक में यूज नहीं होगा. Eatable है तो you will say it, keep fresh. Then avoid breakage. Can we say attract Leakage. customers? यदि शैम्पू है तो लीकेज नहीं होना चाहिए शैम्पू का, राइट? लीकेज नहीं होना चाहिए, बाहर निकल के नहीं आ जाना चाहिए. अवॉइड ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज. Can we say that to attract customers,
like दो Yes, बॉटल yes. है मेरे वो उसके आगे आएंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी पैकेजिंग कि हम प्रोडक्ट को स्टोर कर लें. सो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट नॉट टू अलाउ इट टू स्पॉइल. देन पैकेजिंग इसलिए भी तो होती है फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट, टू स्टोर द प्रोडक्ट सेफली. इफ आई एम सेलिंग टूथपेस्ट, मैं ऐसे थोड़ी ना दूंगी कि ये लो टूथपेस्ट दे रही हूँ, एक प्लास्टिक बैग में लेके जाओ. देयर हैज टू बी अ ट्यूब, राइट, जिसमें मैं उसको भर के दूंगी. सो to store the product. Then, see, let's talk about toothpaste. You are storing it. उसका breakage, leakage नहीं होना चाहिए. Leakage and it should not be spoiled. ठीक है? But उसको एक कार्टन में भी डालते हैं, एक और डब्बे में डालते हैं टूथपेस्ट को. So that is making suitable for transportation. Make it suitable for transportation. Make it suitable for transportation. Then it should appeal to the customers. It should be attractive. Packaging कैसी होनी चाहिए? Attractive packaging ये सारे प्राइमरी पैकिंग में ही आएंगे. नो, ये प्राइमरी है. अब हम आगे सेकेंडरी की बात कर रहे हैं. फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, बड़े बड़े कार्टन जिसमें डाल के हम करते हैं, वो भी बात करेंगे. सो जब मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी, तो मैं अब बॉक्स में इसलिए डाल रही हूँ सो दैट ट्रांसपोर्टेशन में वो खराब नहीं हो. इट इज सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अट्रैक्टिव पैकेजिंग. देन पैकेजिंग आपके ब्रांड को भी तो एडवर्टाइज करती है, प्रमोट करती है. तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अपीलिंग टू कंज्यूमर्स. लिखो, appealing to consumers. Attractive packaging, appealing to consumers. So therefore the color and shape of packaging is very important. Color and shape of packaging is important. Then आप पैकेजिंग पे ही उसका you give information about the product. So packaging का ये क्या है? It gives information about product. Weight, rate, manufacturing date, ये सब पैकेजिंग पे, ये सब बॉक्स पे या यदि चिप्स खरीद रहे हो तो उसके पैकेट पे ही तो लिखा होता है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट. Information comes in tertiary, you know. Yes. Expiry date. Best before so and so date, that is expiry date. Okay. Weight, rate, manufacturing date, expiry date. Then information about it, whether it is vegetarian, non-vegetarian, whatever it is. Then even calories का count रहता है. If it is an eatable, इतना calorie, इतना fat, and so on. So packaging कैसी होनी चाहिए? It should be eye-catching. It should carry information about the product. It should promote the brand image of the product.
packaging should promote the brand image of the product. Packaging should promote the brand image of the product. Packaging should be attractive, eye-catching. So other keywords are attractive, other word which you can use is eye-catching. Then packaging itself should work as advertising for your product. Itne sare, you walk in a mall or you walk in a say where itne sare chips ke alag alag packets pade hain. So it should be like kaise you go and you buy a particular brand, you just go there and you pick it up because you know it is giving information about the product, you know ki yahi khareedna hai meko. So packaging should be such that it promotes your product. Then packaging, package में label भी, one word is label which you should. Label should be informative. Information, how to use. हाँ, so how to use the product. So कई बार information of the product, how to use the product वो भी तो लिखा होता है label पे. How to use the product. Instructions लिखे होते हैं ना. How to use the product. जैसे वो अगर चश्मे वाले वो देते हैं ना वो सोल्यूशन जिसमें लिखा रहता है like put one drop and then. Yes. So maybe एक case study हो सकता है. Just say Kellogg's cornflakes का वो just एक आपको picture दे दे and फिर वो पूछे कि इसकी packaging से आप क्या, कई बार कोई products if it is used, if it is to be sold to children, what colors do you use? Bright and colorful. So yeah, so colors कई बार when it is, मान लो बच्चों को बेच रहे हो वो product, तो colors should be bright. But it is, if it is expensive or luxurious product, so maybe simple colors, smooth, one color tone, okay, appealing to the eyes, eye catching. So if it is children, then colors used should be bright. Then कई बार if it is eatable, nutrition values दिए होते हैं, इसमें इतना आयरन है, इतना कैल्शियम है, इतना ये है. सो इफ इट इज, आप देखो कि केस स्टडी किसके बारे में है. इफ इट इज ईटेबल, उसका न्यूट्रिशन वैल्यूज यू कैन यूज एज अ कीवर्ड. सो राइट डाउन न्यूट्रिशन वैल्यूज. या qualities of a products. Sometimes there is some special offer going on. तो special offer print करते हैं products के ऊपर. कई बार like जो सबसे बड़ा कार्टन है जिसमें वो सब छोटे छोटे और डब्बे अंदर स्टोर होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी अलग से होता है. कार्डबोर्ड पैकेट होता है, बिग कार्डबोर्ड, उसके अंदर आप सब प्रोडक्ट्स को डालते हैं. तो लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज ऑल्सो अ वर्ड. ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, that is during transport
the product is not damaged, to avoid damage. During transportation. So packaging पे, it is a very common question. Product में packaging पे. Should you make a prototype before launching the product in the market? So answer is yes, you should. Why? Because if there is any fault in the product, तुमको पहचान में आएगी before reaching it to the consumers. So my request, children, whatever you have written, make a PDF of it immediately and send it to me. I need to see कि product के बारे में आपने क्या क्या लिखा, and please learn the keywords. Don't do full. Learn the keywords, because while writing the case studies, that is very important.